हेलो स्टूडेंट्स क्लास 8 पिला माने जोडा हम डिस्कस करथिले साइंस रो चैप्टर डिस्कस करथिले एटा हम डिस्कस सरथिला 1 to 10 सरथिला देन 11 to 20 भी सरथिला आज हम डिस्कस करिवा 21 to 30 तो 21 to 30 रे जो क्वेश्चन अछि सेटा कंप्लीटली हला ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर रो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एगरे व्हाट इज पेनिसिलिन जोटे एंटीबायोटिक रो नाम राइट द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक्स तो आम से दिन डिस्कस करते जो दिन तुम टेक्स्ट बुकटा टेक्स्ट बुक खोल टेक्स्ट बुक तो मो पाखे ना मोबाइल टेक्स्ट बुक रखी से टेक्स्ट बुक से देखुची मो पाखे डायरेक्ट बुक मो पाखे ना ओके तो तार बुक चैप्टर खोलुच देख तो पेनिसिलिन हो दिस इज ए व्हाट दिस इज ए एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दैट इज पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो जे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो पेनिसिलिन डिस्कवर कले एंटीबायोटिक्स माने जे बैक्टीरिया को जोड़ा जो बैक्टीरिया को जे किल करे मारे ओके दैट इज एंटीबायोटिक्स जो केमिकल्स व्हिच कैन किल द बैक्टीरिया दैट इज नोन एज व्हाट दैट इज एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को जे माने किल करे दैट इज बैक्टीरिया मारी दिए सेटा तमरा एंटीबायोटिक्स से एंटीबायोटिक्स मेडिसिन तो तैयारी छ ना सेटा एक्चुअली कौन ना जोड़ा एंटीबायोटिक स्पेशली गोटे कौन से जोड़ा साइंटिस्ट जे थिले से तुम साइंटिस्ट एंटीबायोटिक कले से कौन ना गोटे किसी बैक्टीरिया आउ किसी बैक्टीरिया प्रोटोजोआ किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो एटा ही बाहर एंटीबायोटिक्स तो अदर माइक्रो जो किसी अच्छा जो मैंने कि बैक्टीरिया को फर्दर ग्रो करने को चांस दौना तो से तैयारी गोटे एंटीबायोटिक्स बुझीला तो एंटीबायोटिक्स रे जब हम देखिबा देखो हम बुक देखियो बुक तुम पार्टा कहूँ तुमको अपन बुकटार जहाँ भी बुक जिस अच्छे तुमको डिस्कस करिए पड़ो देख ये जो एंटीबायोटिक्स रे देख ये समस्त बुक देखा इन 1929 अलेक्जेंडर बोर्ड देखा जाए तो ओके तो इन अलेक्जेंडर इन बैक्टीरिया दैट इज इन पेनिसिलिन in 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria जो डिजीज बैक्टीरिया जो होता से डिजीज पर से कल्चर करते कौन हो बैक्टीरिया कम कौन केमती कौन ता विषय से कल्चर करते राइट सो कजिंग तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कजिंग बैक्टीरिया ऊपर से ही कल्चर करते ऊपर ही तर्जमा करते ऊपर ही सब एनालिसिस करते देखुले परीक्षा करते कौन होता कौन नहीं जानते राइट सो सडनली ही फाउंड द spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. There is a spores. He found that the spores of little green mold. So green mold, okay, is the another microorganism. The green mold. This is another microorganism. In that green mold, say he found that the spores of little green mold स्पोर्स अच्छे ऊपर सब कवर टाइप स्पोर्स ओके अंडा रे छोट छोट माने अंडा भाया बा स्पोर्स माने जन पढ़ते जन फिंपी मारला भाया जिनसटा स्पोर्स दैट स्पोर्स of a little green mold is in the one of his culture place. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. तो मतलब माउल्ड से रोज ना से बैक्टीरिया को ग्रोथ करे चांस बैक्टीरिया कैनॉट ग्रोथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन माउल्ड तो ग्रीन माउल्ड गोटे बैक्टीरिया ग्रीन माउल्ड गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ जो कौन हो बैक्टीरिया ग्रो हो पारे तो फ्रॉम दैट ग्रीन माउल्ड सो ही ऑल्सो एंड इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड. So penicillin is prepared from the green mold and that green mold which can kill the bacteria. One day he was trying or he was making the culture, doing some culture about the disease causing bacteria. The disease causing
okay, the bacteria which causing disease, but disease caused by bacteria. About that, he was doing some experiments or some culture. So one day he got the mold, green mold. The green mold is one type of microorganism which kill the bacteria, and that bacteria is which is that mold, green mold, which is another product from the green mold, that is penicillin. He named it penicillin, and which can be used to kill the bacteria. That is known as what? Penicillin. Sorry, then explain the penicillin was prepared. Se kotha कहला केमती prepare होला green mold ro penicillin लगे. First लिखियो penicillin is a one type of antibiotic, and it is prepared from the green mold, and green mold which is does not allow the bacteria to grow and also to kill the bacteria. बैक्टेरिया को पूरा मारी दूसरे रे, बैक्टेरिया को मारी दूसरे किसी ग्रीन माउल्स देखो ऑब्जर्व कर ले, देख लीजिए बैक्टेरिया को पूरा कंप्लीटली से मारी दूसरे बा ग्रो करे को चांस दोने, तले से देख लारे ये तो बढ़िया जिंस तो मने कौन ग्रीन माउल रो से वाले जिंस तैयारी कर लेता ना दिले पेनिसिलिन. दैट पेनिसिलिन इज राइट हु डिस्कवर द वैक्सीन स्मॉल पॉक्स. तो स्मॉल पॉक्स रो वैक्सीन के डिस्कवर करले तमरी बॉय लिखाई छे ता ना लिखन रखियो. ओके, स्मॉल पॉक्स. Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798. तो 1798 रे एडवर्ड जेनर ओके सबो जिनस बही पढ़िया पड़ो. तमें जब बुक टा न पढ़ो ना तमें निजे पढ़ो निजे गुड़े जिन शिखब तुम ब्रेन केमती कम कर सार को ब्रेन केमती कम कर तुम जिते निजे पढ़ो तुम ब्रेन बेसी स्टोरेज हो. शुणवा अपेक्षा निजे पढ़ले आउ टे बेटर हो. शुणव निश्चित शिखब निश्चित प्लस निजे शिख निजे बही पढ़ो जिते पढ़ो से ब्रेन तौर बस निजे प्राक्ट कर निजे ट्राए कर. जो ड्राइविंग निजे कले तार मजा अलग पछे बस मजा अलग. तो ड्राइविंग निजे कले जान कौट ब्रेक मारे पड़े कौट एक्सीडेंट देवा पड़े लाइक दैट. तो निजे ड्राइविंग कर निजे चलाओ निजे लाइसेंस बहीटा को निजे थरे पढ़ निजे प्राक्ट कर मैथमेटिक्स है निजे वर्कआउट कर निजे प्राक्ट कर तुम इम्प्रूवमेंट किसी हम. ओके, तो ये है तुम्हारा who discovered ये सरीगला. then what is the antibodies. antibodies कौन जो antibodies हम बॉडी रे तैयारी होछ ना से antibodies रे लिखा है देखो antibodies पूरा क्लियर लिखा होछ. the when disease carrying microbes enter our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbes if it enters again. If the dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected. We are protected from the disease-causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. So in our body some antibodies can be produced when some is very important point. I mean तोले कौन दोचे देखो मार्क करो. See this is very important. Antibodies रो मतलब production होची कौन होचे ना if look at it, it's very important. The invading bacteria and producing the antibodies if the dead or weakened microbes are introduced into a healthy body. Dead and weakened microbes are introduced in your body. So the dead or weakened microbes are introduced into a healthy body. The body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The suitable antibodies से produce करिवो आउ जदि किछि बैक्टीरिया थिबो आमे कोन कहले डेड और वीकेंड माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस कराला. तो संगे संगे बॉडी रे जते थिबो माने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करिवो जे कि फाइट करिवो अगेंस्ट द बैक्टीरिया सब बैक्टीरिया से मार देबो. ओके, एंड फाइट द किल्स द इनवेडिंग बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूसिंग सुइटेबल एंटीबॉडीज. The antibodies remain in the body and we are protected. We are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. तो what happened कौन हला देख तुम जो टीका दियो नी टीका वैक्सीन हम कहले वैक्सीन दउछे कौन पाई
ना केबे फर्दर कौन डिजीज हम ना बा कौन प्रकार रोग हेनी से आगे को बड़ बड़ रोग न होगापाई आम बॉडी रे गोटे एंटीबॉडीज तैयारी होची आम इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाई दि जाउची केमते ना जदि तुम बॉडी रे इफ some dead and weakened bacteria is introduced, then immediately our body will produce some antibodies. So that antibodies will produce color. That antibodies will help what to protect. हम बॉडी रे किसी antibodies मझे मझे बढ़िया दरकार बढ़िले कौन हम ना आउटर जे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री मारिबे बा कोनसी जर्म्स बा कोनसी डिजीज एंट्री मारे समस्त से प्रोटेक्ट करिवो हम बॉडी को प्रोटेक्ट करबे समस्त से फाइट करिवो राइट सो लाइक दैट टू इंक्रीज द एंटीबॉडीज वी आर टेकिंग द वैक्सीन सो द वैक्सीन्स हाउ इज एंटीबॉडीज ऑलरेडी डिस्कशन सो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मॉल सेल ये तो सही गला एटू कथा है हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन्स फॉर स्मॉलपॉक्स चलो डिस्कशन करते हैं वैक्सीन टा केमती काम करछे हाउ वैक्सीन वर्क्स व्हाट इज एंटीबॉडीज हाउ वैक्सीन वर्क्स के लिख परिबो हाउ वैक्सीन वर्क हाउ वैक्सीन वर्क्स वैक्सीन केमती वर्क करछे राइट तो ये होने वाला देन हाउ माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म अच्छी आम डिकम्पोज होची ना जो सब आम गोटे जो जिन अलिया बड़ा बाहर पकई दौचे से आस्ते आस्ते कौन हो स्मेल हो बहुत जोर से स्मेल हो स्मेल को पूरा कम्प्लीटली क्लीयर हम स्मेल न हम रिमूव कर डिग्रेड एंड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस हार्मफुल सब्सटेंस को ताकू तो ब्रेक करके लार्जर सिंपलेस्ट फॉर्म करके पूरा कम्प्लीटली ब्रेकडाउन करुँची कि this microorganism can be used to degrade and harmful and smelly substances. The harmful and smelly substance can be degraded by some bacteria, some microorganisms, and it helps what to decompose. Okay, so लिखा है some bacteria are able to fix the nitrogen. The vegetable fruits, some microorganisms, waste disposals, and also collected wastes and nearby objects. And along with the reference that the collected wastes देखो लिखा है क्लियरली लिखा है तुम भाई पेज नंबर पढ़ो पेज नंबर तुम कह 15 में भी 15 बोधे है सो देखियो 15 बोधे कि 6 पेज बोधे you have often seen large amount of dead and organic matters in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. किसी दिन पर देखियो से तो डेड बॉडी थिला सपोज कुकुर मरी पड़गला राइट तो कुकुर आगे आस्ते 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 मटी मिसिया तो 15 दिन पर 20 दिन पर से टोटल नथी तो गला पड़े से जगह थिला आस्ते 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 ताको पूरा मिलीगला मटी मिसिगला तार जो स्मेल होता से स्मेल भी नहीं दैट मीन्स the dead plants that is microorganism decompose the microorganism decompose the dead bodies. The microorganism can help to what decompose the dead bodies and also the microorganism can be used to degrade and harmful smelly substances. So जो smell substance को क्या remove कला that microorganism that substances and thereby they clean the environment. The substances again are used by the plants and animals. See जो डिकम्पोज है से जो सब्सटेंस बाहर से कौटे ना गचर मूल दिया हम प्लांट यूज कर प्लांट को आराम से यूज कर बुझे दिस इज फिनिश्ड देन व्हाट आर पैथोजेंस पैथोजेंस कौन ए पैथोजेंस होची ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर पैथोजेंस काला द पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड द पैथोजेंस okay the disease causing microorganisms and pathogen कहते जी हमको disease कराए रोग कराए pathogens. Okay, so some microorganisms spoil food, clothing, the leather, and let us study more about this. So this is your pathogens. What? The disease causing microorganisms. What are communicable diseases? The communicable disease what? The communicable disease, the disease which can be communicate. go jana ko no आउ जन को पास करिवो. Communicable disease माने गोटे healthy person to आउ जन को गोटे डिजीज जहाँ रोग हो गोटे पेसेंट टू हेल्दी पर्सन को कम्युनिकेट हम कौन ना से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओके दैट कम्युनिकेट द डिजीज कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम ए पेसेंट टू
from a to a healthy person, right? So disease causing microbial communicable disease लिखियो say communicable disease in contact the microbial diseases that can be spread from an infected person to a healthy person. From an infected person to a healthy person, the microbes can be communicated. That is the disease so formed that is called communicable disease. Okay, तमे छिंक घास होची त पाखरे असला आलना ला जेंदी हमरो बैक्टीरिया जो भाइरस जो हला कोन जेंदी हमरो कोरोना हला तो से बला संते कम्युनिकेट हेला स्प्रेड हेला राउंड टू आउट there are such diseases including cholera, common cold, chickenpox, tuberculosis. Half of these are the communicable diseases. When a person suffering from common cold find droplets of moisture, yes, chikila fine droplets of moisture can be spread to the healthy person. Thousand viruses are spread in the air. The virus may enter the body and of a healthy person while breathing in and cause infection. Yes, but a healthy person पशु से तो infection करेगा और disease produce होगा. Sorry, communal disease. Then asla what is the cause of it? Yes. Sorry. Then what is plasmodium? Plasmodium what? Plasmodium is one type of disease just like a malaria. Malaria also called plasmodium. देखियो plasmodium. Plasmodium, yes, the parasite of malaria, that is a plasmodium. The parasite of malaria, that is plasmodium. What is the cause of measles? Measles is cause कौन? हमें बहुत अच्छी तुम्हारा से बॉक्स देखियो. Measles caused by the virus. The measles is caused by the virus. This is another type of disease which is caused by virus. Okay. Then hepatitis A. Hepatitis A कौन है? Hepatitis A that is also caused by virus. ये भी virus है. तो एक बार से hepatitis कौन हो? देखियो hepatitis A होची drinking water, vaccination water, virus. Yes, hepatitis A. I mean jaundice कौन है? Hepatitis jaundice. Okay, hepatitis A out of hepatitis B. पर से सब देखियो डॉक्टर को पचारियो मुझे तो नॉलेज नहीं तो आम से डिटेल्स पढ़ा तो बही पढ़ी ना कह तो ये आजकल ये सरला मुझे आहरी डीपली बहुत डिस्कस करी ये जोड़ा सी मत आसुनी मुझे शिखी तुमको शिखेबी तो ता भर आम सब जिन पूरा चैप्टर को कम्प्लीट करा टे टाइम लगे. ओके, जदि सब ठीक ठाक बुझीपार निश्चित भाव में मत गोटे भिडियो सब भिडियो सामान हम कौ भिडियो अधिक अधिक हम गोटा कम हम कौ भिडियो बहुत बढ़िया साउंड लाइट सब एवरीथिंग ठीक ठाक आसो कौ भिडियो टे भल हम टे कमजोर हो तो ठीक अच्छे मुझे चेष्टा कर संभव सब गुड़ाक ठीक ठाक करने तो सब समय ठीक न था आरेंजमेंट भी ठीक न था बेले बेले टे भेरी कै से भिडियो टी आप बट आज ए होल देखिए मो सब तो भिडियो ऑब्जर्व कर जो भिडियो टी बुझी न पार्छ आईटा जो भिडियो ठीक से बुझी न पार्छ निश्चित भाव में कमेंट लिख कौन चेंज हो मुझे आउर बेस्ट क्वालिटी कर से टॉपिक आउ गोटे भिडियो मुझे राइट है मुझे जानी मो सब बस कहते सारे साउंड प्रोब्लेम हो कथा टे स्पीड हो हाँ सहीटा तो मोर अच्छी मुझे एडमिट करुँच कथा स्पीड मोर फटाफट 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 सब कथा कहीदेवी है आट ए टाइम है मो स्पीड कहीपे किंतु किए स्पीड कहले मुझे बुझीपारे मु स्पीड कहीपे तो किए स्पीड कहले तो ता कथा को मु सडनली कैच कर कि धारे है बुझी जाए बेले बेले बुझीपारे नहीं कि मुझे फटाफट मुझे वान्स बुझीगले मुझे स्पीड कहीदे पारि. ओके, देन व्यस्त है मुझे स्लो भी कहीपरि मुझे स्पीड कहीपरि स्लो भी कहीपरि है तो ओके. बर्तमान जदि डाउट अच्छे नेक्स्ट कमेंट निश्चय लिखा और भूलबनी सब्सक्राइब करने लाइक करेंगे शेयर करेंगे. ओके, दिस मे रिक्वेस्ट प्लीज. ओके, डेफिनेटली मस्ट सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक also give the comment. Okay.